Good morning, students. Today is the second last day for admission of partnership. I hope now you are doing good for partnership accounts. So basically, when we start our session, first we will revise our basic rules of accounts. Today is a result day. So many students are waiting for results. So best of luck for them, those who are watching me on this live channel. So suppose success and failure is might be, you may face success or failure, but don't give up. Success मिला तो कोई दिक्कत ही नहीं है. So you will give your inter exams, but suppose if you are not crack your exam, तो at least foundation वापस से देना. Don't give up. So कुछ जो mistakes in first exam की होगी तो उसको वापस दोहराना मत. So best of luck to all of you. Let's start with our foundation revision. So first thing, number one is that personal account, traditional approach, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal account and real account are carried to balance sheet and nominal accounts are transferred to P&L. As modern approach, asset debit balance, liability credit balance, capital is equal to credit balance. Asset minus liability is equal to capital. Then income minus expenses is profit. Income credit, expense debit, and profit credit balance. So let's start with our session of admission of partnership. I hope you have finished your goodwill treatments. The first chapter, very simple one. Sorry, second unit. Good morning to all of you. Say good morning in the comment section. Yes, Pramod ji, Aryan ji, ये regular students, Manish Jain, बेटा रितु तिवारी, very good बेटा. अभी आप लोगों को अच्छे से रूल्स आने लगे हैं. आयशा जी, रुचा, आयशा जी, yes, very good morning बेटा. अनिया, आदित्यम, डिम्पल, very good morning to all of you. Sir, Tamanna Patti is saying, sir, I have doubt in the goodwill. Please clear, sir. If profits are given without allowing interest on capital, salary, commission, and charging interest on drawings, then we have to first deduct interest on capital, salary, commission, and then we have to add interest on drawings. And then find out adjusted profit. Yes, beta. Correct. Ritu Tiwari, abhi seriously time nahi hai. So now I can't take illustration number 11 once again because I already have given you all these notes in the last session. तो आप वो पढ़ लीजिए रितु जी और नेक्स्ट सेशन में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. और सपोज नहीं समझा तो देखते हैं हम लोग, कुछ सेशन कभी अरेंज हुआ तो हम लोग कर लेंगे. तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाइए, एडमिशंस. सो व्हाट आर फर्स्ट, यस बेटा, राइट डाउन इन योर 100 पेजेस notebook, 100 pages notebook, write down how to solve admission question. Write down how to solve admission question. Admission questions. लैपटॉप 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 बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. एक सेकंड ना बेटा. Okay, so how to solve admission questions? Important point. Write down step 1. Step 1. Read the question. Step 1, read the question. Okay. Step 2. Step 2. Mark all adjustments. Step 2. Mark all adjustments. Step 2, mark all adjustments.
on question itself. Step 2, mark all adjustments on question itself. Okay. Step 3, important adjustments, new partner admission, therefore capital introduced. New partner admission, therefore capital introduced, number 1. Second one, revaluation oblique memorandum revaluation. Revaluation oblique memorandum revaluation. And third one, goodwill adjustment. So goodwill is a favorite adjustment. That is step 3. A, क्या बोला था मैंने बेटा? Step 3, 3 steps. Number 1 क्या था? A, क्या step 3 में A, new partner admission, therefore capital accounts. B, revaluation oblique memorandum revaluation. C, goodwill adjustment. Step 4. Write down step 4. Update your balance sheet. Update the balance sheet. And step 5. Step 5. Update balance sheet on question. Give adjustments. Prepare balance sheet in answer. Update your balance sheet and then final likho answer. Step 5, answer. Chalo. 5 steps I have given. Follow these steps. First, read the question thoroughly. Then give adjustments on question itself. So chalo karte hain. So I will solve illustration 1. Write down. The following is a balance sheet of Ram and Mohan. Very basic question, but this question I'm taking only solve in exam. You have to understand what is the method of solving in exam. So I'm taking this question. The following is the balance sheet of Ram and Mohan, which is the ratio 3:2. Underline the ratio 3:2. Underline beta. Trade payable, Ram's capital, Mohan's capital. Building, plant and machinery, inventory, trade receivables and bank. Very simple. He has to pay 25,000 as his capital. 25,000 as his capital beta, retained in business, because this is a capital. So retained. So capital is retained. And goodwill का 10,000 लिखो. Distributed in old partners. In sacrificing ratio. Distributed to partners in sacrificing ratio. Distributed to partners in sacrificing ratio. Over. Now, एक second now, beta. Revaluation and memorandum revaluation we already covered in the first 3 sessions, so I'm not going to explain it now. This is only a question solving part. If you want to clear your concepts, you can watch my 3rd session or 2nd session of partnership in this batch. In this batch, we have better properly covered all theory in detail, and then now we are shifted to question part. So now today's session is only answering question answer part. Admission, I have to finish it in this 2.5 hours. So 10,000 as his share of goodwill, you can write over there 10,000 as share of goodwill distributed in sacrificing ratio. This is the first question, so I will be very slow.
distributed in sacrificing ratio. बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है आज लैपटॉप, क्या हुआ इसको यार। So distributed in sacrificing ratio. New ratio is given in the question. So beta new ratio is given in the question, तो क्या होगा बताइए? If new ratio is given in the question, what is it meaning? Yes, tell me it in the comment section. What it means, beta? New ratio is given. Chalo, all of you are aware about this adjustment. Old ratio is not equal to sacrificing. Very good, Tamanna. Old is not equal to sacrificing. The assets are to be revalued as under बिल्डिंग 25,000, तो बिल्डिंग को कितने से बढ़ाना है? बिल्डिंग यू कैन इंक्रीज बाय 7,000, तो 7,000 से बढ़ाओ बिल्डिंग। वेरी गुड, 7,000 से बढ़ाओ। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 3,000, इन्वेंटरी 0 एंड ट्रेड रिसीवेबल 10,000 माइनस 9,500, तो 500 का डिफरेंस है। It was find that the liability of 1,500 for goods, so creditors rupees 1,500, creditors rupees 1,500, give journal entries and also give balance sheet after Sham's admission. Chalo, write down answer, journal entries. Journal entries, serial number, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Debit rupees, credit rupees. Draw fast, 1.5 page pro forma. Draw fast. Yes, beta, please keep question, थोड़ा क्वेश्चन सामने रखो। Write down number 1. Number 1, line by line. He pays 25,000 as capital. So bank account debit to Sham's capital 35,000, 25,000 plus 10,000. So write down first entry, bank account debit to Sham's capital. Bank account debit to Sham's capital.
bank to Shams Capital, being capital introduced by Sham, being capital introduced by Sham, write down 35,000. नरेशन आप लोग लिखो, तब तक मैं एंट्री लिखता हूं. बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय श्याम 35,000. $35,000. लैपटॉप को मेजर प्रॉब्लम है. मैं एक 5 ही मिनट आपको लेता हूं. आप सिर्फ एंट्रीज लिखो, मैं आपको एंट्रीज बताता हूं. बैंक अकाउंट डेबिट, सो राइट डाउन एंट्रीज. बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम्स कॅपिटल. संगम हे काय झाले राव. Bank account debit to Shams Capital, first entry, write down. Now second entry is yes, goodwill distribution. बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल के बाद सेकंड एंट्री लिखो. बेटा 5 ही मिनट देता हूं. सेकंड एंट्री लिखो तब तक. शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल 10,000, 3,000, सॉरी 10,000, 5,000, 5,000. एक 5 ही मिनट.
विंडोज का रिस्टार्ट किया है सिर्फ, तो विंडोज का अपडेट आया है, वो प्रॉब्लम हो रहा है कब इसके वजह से। चलो, थैंक यू। विनू जी, विनू जी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, क्या करूं? एक सेकंड। हाँ, प्रॉब्लम, हाँ अभी हुआ है शायद से, देखता हूं मैं। चलो रेडी कर दो, ठीक है। यस यस, बैंक अकाउंट डेबिट। चलो, once again welcome back once again. So bank account debit to Sham's Capital. I hope now it won't trouble us. Bank account debit to Sham's Capital. Sham's Capital 35,000. Next one, goodwill entry. हाँ, now you can distribute this goodwill share. चलो अभी आप लोगों के साथ, अभी आई होप नो इट विल हेल्प अस। रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जस्ट इसी पे मुझे एप्लीकेशन, उनको पता है कि संकेत सर लाइव है, तो वो लोग कमेंट्स करना शुरू कर दिए। सो उत्सव सिंह जी, यस बेटा उत्सव सिंह, congratulations, many students they cleared their exams, so I hope now every one of you, those who cleared, will study. Please don't take inter in same way as foundation. You need proper hard work from very first day in inter. So we will meet for inter. तो अभी तो हम लोग बाद में बात करेंगे, पर yes, congratulations to all of them, those who cleared and those who are watching my this foundation batch session and those who want to interact with me. So I will keep one session for you. जल्दी ही एक सेशन रखेंगे और आगे जाएंगे। चलो, और मेरे ये जो स्टूडेंट्स है ना, जो अभी मैं एग्जाम देने वाले, वो भी सब क्लियर होने वाले। 80 मार्क्स में जस्ट चेक कर रहा था, मुझे पॉपअप हुआ टेलीग्राम चैनल पे, 85 मार्क्स अपने दिल्ली के स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, दोज हु स्टडीड फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्टडीज। एंड ऐसा ही पढ़ते रहो, इंटर में भी हम लोग बहुत मजे करेंगे और स्टडी करेंगे। चलिए, सो bank account debit to Sham's Capital, bank account debit to Sham's Capital, first entry, and then second entry will be 10,000 is a share of goodwill. So this goodwill share will be, we have to divide it in the sacrificing ratio. So after 1.5 page, write down working note 1. Working note 1 is sacrificing ratio. Working note 1 is sacrificing ratio. Sacrificing ratio में लिखो राम, मोहन एंड श्याम। अभी वापस से थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। राम, मोहन, श्याम। ओल्ड रेशो, yes, what is the old ratio beta? 3:2, 3/5, 2/5. न्यू रेशो, मानवी खन्ना जी भी, यस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। मानवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट, और वो भी क्लियर हुई। शी गॉट 80 मार्क्स इन अकाउंट्स। उसने अभी जस्ट पोस्ट किया हुआ है, और ये कमेंट सेक्शन में सब लोग आ रहे हैं, अभी हमारे साथ जुड़ रहे लाइव सेशन में।
So Manvi ji, congratulations. 5 by 10, 3 by 10, and 2 by 10. 3 by 10, 2 by 10. Sacrificing ratio. Sacrificing ratio. 6 by 10, 4 by 10, 6 by 10, 1 by 10 giver, 1 by 10 giver, and 2 by 10 receiver. So sacrificing ratio is 2 by 10 receiver. Working note 2. Working note 2. Goodwill. Goodwill distribution. Goodwill distribution. Sham's capital. कितना लाया था श्याम ने बेटा? 10,000 debit, and it will be divided over two parts, 5,000 credit and 5,000 credit. So 5,000, 5,000 credit. $5,000, 5,000 credit. So goodwill entry, write down. Goodwill due entry. Sham's capital account debit. Sham's capital account debit. 10,000 to Ram's capital to Mohan's capital. Being goodwill due. Being goodwill due. Number 3. Number 3. Yes, beta. Number 3. Now line by line जा रहे. Building is revalued by 7,000 upwards. So building account debit to revaluation, only one asset is increasing. So it's your profit. Building account debit. Building account debit to revaluation. Building account debit to revaluation. Building to revaluation. 7,000. 7,000. Fourth entry. Fourth entry. Revaluation to plant and machinery. Plant and machinery. 3,000 to provision for doubtful dates. To provision for doubtful dates. 500 and to trade payable 1,500. Next entry, fifth entry, revaluation profit and loss we will transfer. See the balance in revaluation. 7,000 credit. Okay, so 7,000 credit hai, and revaluation debit by 5,000. So it's a loss. So credit is more. Credit is more means it will be transferred to partners capital, old partners in old profit sharing ratio. Remember. So revaluation का profit किसको transfer होगा? Old partners in old profit sharing ratio. So revaluation को debit देना है. So what is the balance in revaluation? 2,000. Revaluation balance is 2,000 to Ram's capital. To Ram's capital. To
Mohan's capital. To Mohan's capital. What is the ratio? 1200, 800. Ratio 3/5, 2/5. Friends, being profit transfer. Being profit transfer. करेक्ट है? Being profit transfer. So यहाँ पे हमारी सभी एंट्रीज हो जाती है. Now बेटा लेजर अकाउंट you can do by your own. And I will teach you how to prepare balance sheet. Ledger account में capital account बनाओ. We are going to prepare it in the next question. Just telling you how to prepare the balance sheet. See, now bank account debit to Sham's capital. So bank account, now you can update your balance sheet. So bank में we will add 25,000, sorry, 35,000. Sorry, addition by 35,000. And new partner we will write Sham 35,000. Correct? So entry का posting. So this is called as updation of your balance sheet. इसको क्या बोलेंगे? Update your balance sheet by looking into journal entries. So looking into journal entries, आप अपने balance sheet को update करोगे. ठीक है? अभी बैंक टू शाम्स कैपिटल होने के बाद शाम्स कैपिटल लेस करेंगे 10,000 प्लस राम में ऐड करेंगे 5,000 एंड मोहन में भी ऐड करेंगे 5,000. सो दिस इज कॉल्ड एज अपडेशन ऑफ योर बैलेंस शीट. ओके, नेक्स्ट वन. देन सेकंड एंट्री ओवर. बिल्डिंग ऑलरेडी revalued 7,000. Revaluation is a temporary account. It is going to transfer. So don't prepare revaluation account in balance sheet. हाँ, but एग्जाम में प्रिपेयर करना पड़ेगा लेजर अकाउंट्स में. लेजर अकाउंट्स में यू आर गोइंग टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. प्लांट एंड मशीनरी वी ऑलरेडी रिड्यूस्ड इट. So 3,500 and creditors already we have recorded. Revaluation balance 0 and Ram's capital increased by 1,200. So Ram का capital 1,200 से बढ़ा दो and इसका capital भी कितना? राम का 1,800 से 800 से, सॉरी, मोहन का 800 से. मोहन का 800 से. So now बेटा ट्रेड पेएबल 15,000 plus you can write this 1,500 over here. ट्रेड पेबल इधर लिखने से अच्छा ऊपर ऐड कर देते हैं. सो 16,500. राम्स कैपिटल टेक ऑन कैलसी 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1,200. सो राम्स कैपिटल इज 26,200. मोहन्स कैपिटल 25,000 प्लस 5,000 प्लस 800 30,800. श्याम्स कैपिटल 25. Building 25, 12, 9,500 and this is 40,000. Check the total. Tell me the total. Yes, tell me total. What is the answer? Yes, take a total. 98,500. So it's very simple question. Journal entries I have taken 98,500 correct है ना? So first question is very simple. बेटा महिमा पेंसिल से कर देना बेटा, पेंसिल से कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, पेंसिल से कर देना बेटा. सर ट्रेड पेबल की अमाउंट 15,000 प्लस 1,500. Bhumika, good morning sir. Today I passed my CA foundation and sir I am super excited for CA intermediate classes with you and other teachers. Okay, thank you for your efforts. बेटा thank you Bhumika and बहुत अच्छा लगता है. मानवी, thank you sir for your amazing teaching.
यस बेटा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फाउंडेशन के जैसा ही इंटर में भी पढ़ते रहना। आप वन ऑफ दी रैंकर स्टूडेंट है बेटा, उतना फोकस करना। ओके, यस बेटा, एनी डिफिकल्टी in question number 1? Illustration 1 tallied. So we will move to illustration number 2. Illustration 2 पे आते हैं। बट आई विल शो यू द आंसर। एक अभी हम लोग टाइम लगा के सॉल्व करें क्या? यस, बताइए जल्दी से। टाइम लगा के सॉल्व करना है, अभी तो लैपटॉप भी वर्क कर रहा है अच्छे से। इफ यू आर रेडी तो हम लोग टाइम लगा के सॉल्व करेंगे। ओके, revaluation beta, amount is not given in the, revalued amount means total amounts will be given in the question. Aisha ji, revalued amount are never given in the question. Revalued amount just 25,000 is given and you have to find out how much is the balance. Okay, so if you are ready तो हम लोग अभी टाइम लगा के करते हैं। चलो अभी टाइम लगा के करेंगे सॉल्व। टिकटिकी जी प्रकट हो जाइए, टिकटिकी जी को बुला लेते हैं। चलो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 से शुरू करते हैं। A and B are partners. So focus now, focus. A and B are partners, sharing ratio 3:2. The balance sheet is given below. Trade payable, capital AB, office equipment, then plant, furniture, inventory, trade payable and bank. C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill or 1/5 share. Now old ratio is not, new ratio is not given. So write down new ratio is not given. Therefore, old is equal to sacrificing. Old is equal to sacrificing. Old is equal to sacrificing ratio. Provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts is 2%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 2%. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रेड रिसीवेबल 25,000, 25,000 में से वी विल डिडक्ट बेटा 500 रुपीज, 500 रुपीज। बट वेट, partners are agreed to take assets and liabilities at same amount. Okay, so assets and liabilities are at same account means you can write over here, this is memorandum revaluation account. Memorandum revaluation account. So here we are going to write it here only 500 loss. So don't deduct it from trade receivable. You want to show your assets and liabilities at original figure. चलो जल्दी से आते हैं। Inventory to be written down by 10%. So inventory to be written down by 10%. So 3,000 का loss. Freehold premises 2 lakhs is to be revalued at 2,40,000. So बेटा profit of 40, plant 35,000. So loss 5,000.
Then furniture 25,000. So profit 5,000 furniture. Then office equipment 27,500. So 2,500 का profit. Okay. So these are our profits. They don't want to change these figures. So write down now memorandum revaluation account. First one, memorandum revaluation account. How to solve the question? Write down memorandum revaluation account. Particulars rupees. Particulars rupees. Beta, skip 8 lines. 8 lines to 10 lines skip कीजिए. 10 lines skip कीजिए. Memorandum revaluation account 10 lines छोड़ दीजिए. Then write down partners capital account. Partners capital account. Particulars A, B, C. Particulars A, B, C. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा 8 लाइंस. 8 लाइंस का छोड़ दीजिए. 8 लाइंस. And then write down balance sheet as on 1st April 20. Liabilities rupees. Asset rupees. 8 lines. Liability rupees, asset rupees. चलो ड्राइंग के लिए 20 सेकंड देता हूं आपको. सिर्फ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 6 लाइन 7 लाइंस का ड्रॉ कीजिए एंड 3 to 4 लाइंस छोड़ दीजिए. 3 to 4 लाइंस ब्लैंक छोड़िए. सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ड्रॉ फॉर 6 to 7 लाइंस. फटाफट ड्रॉ कीजिए. Okay. Okay. So now memorandum revaluation account ready. So first thing, write down opening balances. Write down opening balances. So partners capital account. By balance brought down. By balance brought down. 2 lakhs and 1 lakh. 2 lakhs, 1 lakh. Next. Next one. C will bring 50,000 as capital and 10,000 goodwill. चलो 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 fast लिखो. C का calculation by bank. By bank, how much beta? By bank 60,000. 60,000. And on question you can write bank add 60,000. Question में bank में add कर दो 60,000. Then beta goodwill का share 10,000. Wait.
Now, who will get that goodwill? Yes, you can write over after balance sheet, after 8 lines, goodwill share 10,000 debit to C will be divided in sacrificing. Now, old is equal to sacrificing. So, what is the sacrificing ratio, beta? Sacrificing ratio देखो कितना है, फटाफट देखिए. Sacrificing ratio कितना है देखो. Sacrificing ratio 1/5. So, old ratio is 3:2. 3/5 में divide करो. Sacrificing ratio 3/5 as new ratio is not given. So this is sacrificing ratio. A 6,000 4,000. A और B में 6,000 4,000. चलो आ जाओ कैपिटल अकाउंट में आ जाओ. A में राइट डाउन 6,000, B में राइट डाउन 4,000 एंड C में डेबिट में 10,000. So by C, 2A and B. 2A and B. Okay, by C's capital and 2A and B. Now, memorandum revaluation account, line by line. So, first one, loss. Loss, debit beta, and debit loss and profit credit. Correct? Hai? So, loss, debit, profit, credit. In first case, it is a loss. 500 ka loss. To provision for doubtful dates, DD. To provision for DD, 500. Next. 3,000 का लॉस टू इन्वेंटरी. टू इन्वेंटरी 3,000. Then by freehold premises 40,000. By freehold premises 40,000. To plant 5,000. To plant 5,000. To, sorry, by furniture 5,000. Plant 5,000 loss and by furniture 5,000 profit. By equipment 2,500. And now you can do beta calculations. Now see the profit or loss. Find out the profit or loss. Yes, tell me profit or loss beta फटाफट. कितना प्रॉफिट और लॉस आया? यस, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो. प्रॉफिट 39,000 आया. Very good. 39,000. So this total is 47,500 minus 8,500. 39,000. Now see, red pen. Not in old ratio. Now it is in sacrificing ratio. It is in sacrificing ratio. Red pen लीजिए. Write down. Profit share. C's profit share 39,000 into 1/5. 39,000 into 1/5. Now this is very important adjustment like goodwill because you don't want to change your assets and liabilities. Remember that memorandum revaluation account. Now normal revaluation profit will be transferred in old ratio and memorandum revaluation profit will be transferred in sacrificing ratio. Okay. So 39,000 into 1/5, 7,900. It is divided in two parts. A, B. A को credit, B को credit by in the ratio of 3/5, 2/5. So what is the amount? 4,680
and 3120. 7,900 divided by 5 into 3 is equal to 2 is equal to. Write down. रेड पेन से एंट्री लिखना. By C, memorandum revaluation to A and B. On the same line, you can write 7,900 here on the debit side and credit side 4680 and 3120. And now write down two balance carried down. So memorandum revaluation over, two balance carried down. Take a total ABC. This is 2,10,680. Without calci you can do. This is 1 lakh plus 4,000. 1 lakh 7,120. This is 60,000. 2,10,680. So balancing figure is also same. 2,10,680. 1,07,120. Same. And this balancing figure is 42. Sorry, 7,000. Sorry, this is 7,800 beta. This is 7,800. Sorry, मेरी mistake हुई. 7,800. Final answer is correct. 7,800 final answer is correct. मेरा mistake हुआ. 7,800 है. 7,800. And 42,200. So this is 60,000. Sorry. Answer correct था. 7,800 is divided in the ratio of 3:2. So 15 minutes, actually 12 मिनट में होना चाहिए था. बीच में explanation भी हुआ. 7,800 is a correct answer. 7,800. 7,800 it will be. Yes. 7,800. See beta, 7,800 debited to C and credited to A and B. इतना याद रखो. Credited to A and B. इतना याद रखिए. बेटा मॉड्यूल में आंसर डिफरेंट नहीं है. फाइनल आंसर इज सेम. फाइनल आंसर इज सेम बेटा. डिंपल उन्होंने क्या किया, दे हैव डिवाइडेड ओल्ड रेशियो में, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया और ये न्यू रेशियो में डिवाइड किया. ओल्ड माइनस न्यू क्या होगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग. सो वी हैव डन इट ओनली वंस. So instead of writing debit, then writing credit, we have taken only once 39,000. Then we calculated each share 1 by 5, 7,800. That we have divided it in two parts, 3:2 ratio mein, and we are getting the final answer. Okay. So now it's your choice whether you want to do it by old ratio and new ratio or directly sacrificing ratio. Tell me it in comment section. देखो ICA ने कुछ नहीं किया बेटा. स्टडी मटेरियल में पहले ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया, फिर न्यू रेशियो में वापस डिवाइड किया. मैंने क्या किया, ओल्ड न्यू ये करने से अच्छा डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग में लिखा. डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग में लिखा. द सेम आंसर आई एम गिविंग यू. सो ओल्ड माइनस न्यू की स्टेप्स बदल जाएगी ना डिंपल. ओके. सो 39,000 प्रॉफिट आया, उसको 1/5 सेम गुडविल एडजस्टमेंट जैसे किया. सेम गुडविल एडजस्टमेंट. ओके. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मींस सेम गुडविल एडजस्टमेंट. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिख के रखो, इज सेम एज गुडविल एडजस्टमेंट. Is same as goodwill adjustment. Clear बेटा? 100% clear? Okay. ठीक है. एक काम कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए. 12:10 को आते फिर फटाफट आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक ब्रेक में यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए. चलो टेक अ ब्रेक. ब्रेक ले लीजिए.
चलो, come to illustration number 3 beta. A and B are partners in a firm sharing profit or losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of A and B is given below. Trade payable, bank OD, capital accounts, building, furniture, inventory, beta. Then A's capital and B's capital, building, here cash balance. C is admitted for 1/6 share and he introduced 25,000 respectively. So his capital is 25,000. The new profit sharing ratio ABC 3:2:1. C is unable to bring in cash for his share of goodwill and they decided to calculate goodwill on the basis of C's share in the profit and capital contribution made by him on the firm. So beta, this is called as hidden goodwill. So this is a calculation of hidden goodwill. We already solved this question. Furniture is to be written down by 870. So furniture written down 870 loss. So minus it. Then beta, inventory to be depreciated by 5%. So inventory depreciation 5%. So कितना आएगा? Inventory ये 1070 loss. Then provision is required for 5%. Okay. A provision to be made for outstanding wages for 1560. Outstanding wages 1560. The value of building having appreciated up to 29,200. See, so but outstanding wages is also your loss. Outstanding wages is also your loss. And building you increased by, this is increased by 3,200. This is your profit. This is your profit. And the value of investment increased by 450. This is again your profit. Chalo. So very simple question. So first calculation, working note 1, calculation of goodwill. So write down first. Yes, write down the answer. What is given in the question? We will prepare balance sheet also, though it is not asked. Now memorandum revaluation or revaluation? Revaluation. So beta, revaluation is old ratio. You can write for your understanding old ratio, and memorandum revaluation sacrificing ratio. So assets and liabilities can be changed. On debit side loss, on credit side profit. Particulars rupees, particulars rupees. 7 lines. Then write down capital accounts, particulars A, B, C, particulars A, B, C. Particulars ABC, particulars ABC. And balance sheet, liability rupees, asset rupees. Liability rupees, asset rupees. Draw fast. Yes, 8 lines. 8 lines. Total. Total. Partners capital 6 to 8 lines. Total. Draw fast beta. First you can draw ABC. Sanjay Kumar ji, congratulations. Beta,
two of my students, Divesh and board of studies only, they message me, sir, we scored 91 marks in accounts, and this is what you called it as hard work. और follow करना फर्स्ट डे से फॉलो करते रहे थे, तो उनको अच्छा स्कोर हो गया। और इंटर में तो ये रैंक मार सकते हैं, अभी उनको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा तो इंटर में रैंक ला सकते हैं। सो congratulations to those who have cleared, and Sanjay Kumar ji, congratulations to you. Yes beta, without my interaction with you, though you scored good marks, तो बहुत बढ़िया। yes, वर्किंग नोट 1 पे आते हैं। वर्किंग नोट 1, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, okay, so write down is equal to capital should be minus actual capital. Actual capital. Capital should be step 1. So after 4 lines, you can write step 1. Capital should be you can check here, for 1/6 share 25,000. 1/6 share 25,000. Each share 1, capital 25,000. Total share 6, so 1,50,000. Minus what is actual capital of AB? A और B का कैपिटल कितलो छे? 80,000 plus 25,000. A plus B plus C, 80,000 plus 25,000. So this is 1,05,000. So total goodwill is 45,000. Okay. Now, new ratio is given or not given, beta? New ratio is given. New ratio is given. You can write. Therefore, old is not equal to sacrificing. So calculate sacrificing ratio. Working note 2. Working note 2. Sacrificing ratio. Sacrificing ratio. बेटा प्लीज मैच स्पीड विथ मी। हाँ बेटा प्लीज, ये एग्जाम स्पीड है और ये जो फॉलो करेगा उसी को 90 मार्क्स आने वाले हैं। ओल्ड रेशियो 3/5 2/5। न्यू रेशियो 3/6 2/6 1/6। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ? इधर 5/5 से करो, इधर 5/5, इधर 6/6। 18/30, 12/30, 15/30, 10/30, 5/30, 15 10, yes correct। sacrificing ratio 3/30 giver, 2/30 giver, 5/30 receiver. So 3:2 is a sacrificing ratio. Each share 1/6 into Darshan, please watch my previous session. I already covered it. So 45,000, 1/6 into 45,000. So 1/6 into 45,000 कितना हुआ बेटा?
7,500 debit and divided in the ratio of 3:2. A credit, B credit, 4,500 and 3,000. 4,500 and 3,000. Now, oh, sorry, I forgot to write by balance brought down. A and B. ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखने हैं कोई भी क्वेश्चन में. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 44,000, 36,000. Then by C's capital, oh sorry, by bank, it's okay बेटा, सही है माँ. Sir, I get flung. Okay, होता है लाइफ में. So by bank, C's capital 25,000. Those who want to give it seriously once again, तो सही है माँ जी, I will tell you some tips for passing exam in second attempt. No worries beta, failure is a part of success. So 25,000 by bank आएगा. Okay, चलो 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 फास्ट. कितना था? 4,500 and 3,000. 4,500, 3,000 by C, and here 7,500 to A and B. Goodwill. Now, okay, goodwill entry तक हो गया. Now बेटा, लॉस प्रॉफिट टू फर्नीचर, लाइन बाय लाइन जाता हूं. 870, इधर बाय बिल्डिंग है, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है हमने. सो बाय बिल्डिंग 3,200. देन इन्वेंटरी रिड्यूस हुआ है, सो टू इन्वेंटरी 1070, ये यहां से लिख रहा हूं मैं. बाय इन्वेस्टमेंट 450 and two outstanding wages 1,550 and trade receivable 5% ना. So 35,000 का 5%, 35,000 का 5%, 1,750. आउट ऑफ दैट ये 1,750 बताना है. So 200 already is there. So increased by, so provision for DD 1,750 we need and 200 is already there. So provision for doubtful debts is also, sorry, outstanding wages 1,560 था. Okay, 1,560 and this is 1,550. So provision for DD 1,550. C 870 plus 1,070 plus 1,560 plus 1,550. So this is 5,050. I think both sides are and there is one. Yes. Trade payable 1,400 which is not to be paid off. ये फायदा है आपका. It's a profit. You don't have to pay that. So by trade payable, I forgot last line. By trade payable 1,51400. You can check here 3,200 plus 450 plus 1,400, 5,050. And now my balance sheet, I'm going to tally it. Two balance carried down. This is 48,500, 39,000, 25,000, 48,500, 39,000, 17,500. So balance carried down. Now you can write it in the balance sheet. Yes, beta. Balance sheet में लिख दो.
I will do it here only. 17,000 minus 1,400. So I'm getting 15,600. 1560. Bank code as it is 9,000. ABC 48,500. 39,000. 48,500. 39,000. And last one is 17,500. 29,200. 4930. 20,330. 35,000 minus 5%. 33,250. 2,950. And 40,500. 1,31,160. Yes. Yes. 131,160. Yes, you can do it and tell me over. जब आप ओवर लिखोगे राइट डाउन इट फेयर, राइट डाउन इट इन फेयर. जब आप ओवर लिखोगे तब मैं आगे जाऊंगा. चलो जल्दी लिखो. Illustration number 3 is simple for hidden goodwill. Illustration 3 is for hidden goodwill. Write down over. मोहम्मद शादन जी, थैंक यू सो मच सर. आपकी टीचिंग स्किल के वजह से अपना फाउंडेशन क्लियर हो पाया. यस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस. देन झाला जी, sir, thank you so much. I am your December 22 student. Scored 91 mark in accounts, beta. Very good. So provision for doubtful debts 5% करना है. समझ ले आदित्य. 5% you have to do provision for doubtful debts. 35,000 पे 5%. It is 1750. तो उसमें से 200 रुपया जो है ना वो ऑलरेडी आपने क्या किया हुआ है. 200 रुपया आपने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है. तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना प्रोवाइड करेगा. सो एक्स्ट्रा लॉस इज 1550. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. यस. चलो टैली करो यार, जल्दी जल्दी लिखो. गॉट इट गॉट इट गॉट इट. तन्मित कौर, तन्मित कौर बहुत फॉर्म में आ गई ली तू एकदम. 17 मिनट 47 सेकंड्स टाइम रिक्वायर्ड. चलो चलो चलो. वी कांट वेट फॉर बेटा. फर्दर वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4. चलो 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 फास्ट. मैक्सिमम क्वेश्चंस करने आज. एंड बेटा प्रीवियस सेशंस के एडमिशन के क्वेश्चंस देख लेना. आई हैव कवर्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस. जो नहीं यहाँ पे कवर हो पाएंगे आज, जितने होंगे उतना करता हूं. नहीं कवर हो पाए तो अगले क्वेश्चन जो है वो आप देख लेना बाकी इसमें. और मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा आपको बाकी का. आज एडमिशन और लास्ट सेशन रिटायरमेंट डेथ पूरा रिकॉर्डेड रहेगा. यदि आईसीआई देता है एक दिन एक्स्ट्रा तो ठीक है, क्योंकि उनको भी लिमिटेशंस है. बट आई वांट एवरी क्वेश्चन टू बी सॉल्व इन क्लास ओनली. सो मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन देना. नहीं हो पाया तो ठीक है, 1 घंटा है हमारे पास. विल ट्राई आवर बेस्ट. एक 3 से 4 क्वेश्चन और कंप्लीट करें. नाउ इफ रिजर्व्स आर इन बैलेंस शीट, रिजर्व्स होगा तो क्या करेंगे. चलो इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाइए. चलो
चलो इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट, चलो चलो चलो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 4। नो बेटा डिंपल, बेटा डिंपल डिंपल डिंपल, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा बेटा, कुछ भी टेंशन मत ले। जैसे गुडविल के एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, वैसा ही मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है। आया समझ में? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नॉर्मल रिवैल्यूएशन होगा तो ओल्ड रेशियो। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यू चेंज करने। प्लीज मेरा प्रीवियस सेशन देख ले डिंपल। डिंपल बहुत सिंपल टेक्निक्स दिए मैंने पार्टनरशिप के, इतने सिंपल टेक्निक्स कि 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चे भी आराम से कर लेंगे अभी क्वेश्चंस। इससे ज्यादा क्या सिंपल टेक्निक्स दूं मैं बेटा लाइफ में? बहुत बढ़िया टेक्निक्स है ये, आप लोग एक बार खुद से करो। पार्टनरशिप इज नॉट अ टॉपिक जो खुद से भी करना पड़ेगा आपको। ये मैं कितना भी सॉल्व करवाऊं, आपको एक बार खुद से करना पड़ेगा ये चैप्टर। आपकी एनर्जी लेवल ही नहीं, ऐसे ऐसे थक जाते हो आप लोग, यार 3 क्वेश्चन हो गए बस हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत क्वेश्चन करने टाइम लगा के तो होता है। अरे भाई मनीष जैन, आप टेंशन मत लीजिए, एग्जामिनर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। अरे वो एग्जामिनर सीए है बेटा, एग्जामिनर कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है, उसको समझता ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग, तो वो मार्क्स दे देगा। डोंट वरी, आप आंसर टैली करो, कैसे नहीं आंसर देगा। यदि आपको लगता है नहीं भाई ऐसे के मेथड से जाना है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो, वैसा करो, टाइम वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा मैंने बताया उस दिन भी, दोनों टेक्निक से आपको सैक्रिफाइसिंग यूज करना है, सैक्रिफाइसिंग करो, ओल्ड लिखो वापस से न्यू लिखो, मिरर इमेज देखे, दोनों टेक्निक सही है। और एग्जामिनर ये आप है ना, पहली चीज तो है ना, किसी के बहकावे में मत आओ। अरे ऐसे है कि लोग जो भी है, ये समझ लो कि वो सीए लोग बैठे हुए हैं। अभी आप कुछ भी लिखते हो और फिर ऐसे को बोलते हैं आंसर्स के मार्क्स नहीं दिए, और उनके ऊपर भी प्रेशर है भाई। आप समझ लो कि उनको 1 महीने में पूरा पेपर टैली करके, आपकी प्रोसेस सिंपल नहीं है। यहां से पूरे इंडिया के पेपर एक जगह पे जाने वाले। तो ये यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, कुछ भी बना लेते हैं आईसीए के खिलाफ। तो मैं तो कुछ उसके ऊपर कमेंट नहीं करता, पर कमेंट्स करने को देखा ना, आपको मैं 10 पेपर देता हूं, कितने दिन में ये यूट्यूबर्स बना लेते देख लेना। तो आईसीए को, ठीक है भाई, इंसान है, कुछ गलतियां हो भी सकती है चेकिंग के टाइम पे, पर इट्स नॉट आपके हाथ में 10 पेपर देता हूं और आपको आपके फ्रेंड्स को भी वही 10 पेपर चेक करने के लिए देता हूं। इंसान टू इंसान चेंज होने वाला है, और आपने कितना अच्छे से लिखा है तो क्यों वो आपके मार्क्स कट करेगा? प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। चलो 8.69 बेटा सही है माँ, पेज नंबर। तो कोई बात नहीं, लास्ट सेशन है मेरा, नेक्स्ट सेशन, उसके बाद अदर फैकल्टी विल टेक यूर रिमेनिंग 2 चैप्टर्स और फाइनल अकाउंट में वापस आ जाएगा, कंपनी फाइनल अकाउंट्स में। ओके, चलो। दलाल बैनर्जी मलिक आर वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो 2:2:1 ये हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर बैलेंस शीट इज गिवन बिलो। ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, जनरल रिजर्व। सो राइट डाउन जनरल रिजर्व के बाजू में हिडन एडजस्टमेंट। whenever in question hidden adjustment लिखना है, जनरल रिजर्व, एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन दी ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड करना है आपको? ओल्ड रेशियो में, 2:2:1। ओल्ड रेशियो 2:2:1। अरे टिकटिकी जी चालू करना रहेगा। हाँ, 2:2:1। सो दिस इज द जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट। तन्मीत मुझे सच में अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, आपके डाउट्स आप वापस लिखो। दलाल बैनर्जी मलिक, ये कैपिटल दिए है, कैशियर बैंक दिया। मिस्टर मिस्त्री इज एग्री टू ब्रिंग 5,000 इज टूवर्ड्स कैपिटल। सो बैंक में ऐड कर देता हूँ 5,000 एंड मिस्त्री कैपिटल, मिस्त्री में इधर लिख देता हूँ 5,000। अपडेट योर क्वेश्चन में बैलेंस शीट। द इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2,500। सो इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2,500। प्रॉफिट, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, -650 लॉस 6। Reserves for doubtful debts 10% on delayed receivable, less 550 loss. The value of land and building is to be increased by 20%. So 5,000 profit. The value of goodwill is 15,000. See 15,000 sacrificing ratio में divide करना है. General resource is transferred in capital accounts.
तो जनरल रिजर्व वैसे भी हमने किया रहता -6,500 एंड दलाल बैनर्जी मलिक को ऐड हो जाएगा जनरल रिजर्व इन ओल्ड रेशो, तो जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन, so old is not equal to sacrificing ratio, write down. And the outstanding liability of Sen which was paid by dalal, so इसकी एंट्री क्या होगी, IMP एंट्री मार्क करके रखो. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, नाउ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सेन, तो वो किसने पे किया, वो माइनस हुआ एंड दलाल का कैपिटल ऐड हो जाएगा. लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, याद आया, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, सो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू दलाल्स कैपिटल, IMP आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू दलाल्स कैपिटल. सो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में से मैं कम करेगा 1000, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू दलाल्स कैपिटल. इट्स नॉट रिवैल्यूएशन, इट्स टू दलाल्स कैपिटल. चलो लिखो, यस, राइट डाउन. सबसे पहले लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. 8 lines, 8 lines. But a capital account take on 2 pages. Capital accounts take on 2 pages because there are 4 partners. So it's very difficult. Otherwise, if your handwriting is small, you can fit it on 1 page. But beta possible होगा तो take on 2 pages. So 2 pages पे लीजिए. If your handwriting is not proper, 2 pages draw कीजिए पहले. Particulars, दलाल, बैनर्जी, मलिक भाई, मिस्त्री भाई. Yes. Particulars, दलाल, बैनर्जी, मलिक जी, मिस्त्री भाई. कैपिटल अकाउंट ड्रॉन. स्पेलिंग बराबर लिखो, मैंने नाम के स्पेलिंग ऐसे ही लिख दिए. बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/20, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस. ड्रॉ कीजिए, चलो फटाफट ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ होने के बाद लिखो ओवर. बैलेंस शीट 7 lines, 10 lines, बैलेंस शीट 10 lines, बैलेंस शीट 10 lines. This will help you at the time of revision. ड्रॉ कीजिए प्रॉपरली. चलो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग बेटा. चलो चलो, फॉर्मेट्स ड्रॉन, फॉर्मेट ड्रॉ किए फटाफट सबने. ओके, चलो राइट डाउन.
सबसे पहले तो लिखते हैं सैक्रिफाइस ओपनिंग बैलेंसेस. ओपनिंग बैलेंसेस. यस बेटा, व्हाट आर ओपनिंग बैलेंसेस? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंसेस लिखो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. કેટલું છે બાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન? 12 12 5 12,000 12,000 12,000 5,000 12,000 12,000 5,000. करेक्ट है. उसके बाद बाय जनरल रिजर्व. बाय जनरल रिजर्व. नाउ सी टेक ऑन कैलसी. लीजिए कैलसी पे 6,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 2600 2600 1300 2600 2600 1300 बाय जनरल रिजर्व. देन by bank means 3 capital. By bank he brought 5,000. So bank में ऐड कर दिया 5,000. Then new profit sharing ratio is given. चलो working note 1 write down after balance sheet. Working note 1 calculation of sacrificing ratio. After balance sheet you can write calculation of sacrificing ratio. D B Ma Me Dalal Banerjee Malik Mistry. ओल्ड रेशियो. ओके, सबके नाम लिखे. ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 2:2:1. 2/5 2/5 1/5. न्यू रेशियो. न्यू रेशियो કેટલો છે? 5:5:3:2. 5:5:3:2. 5:5:3:2. करेक्ट है. सो ओल्ड रेशियो को 3/3 से मल्टीप्लाई करता हूं. सो 6/15 6/15 3/15. Sacrificing ratio 1/15 giver 0 2/15 receiver. Sacrificing ratio is over. Now calculation of goodwill. Working note 2 calculation of goodwill. Yes beta. Mistry share. Mistry share is equal to 2/15 into goodwill amount 15,000. 2,000. Debit. Dalal Banerjee
1000 credit, 1000 credit. Banerjee 1000 credit, Dalal भी 1000 credit. So now बेटा कैपिटल अकाउंट में लिखो दलाल को 1000, 1000, 2000 by Dalal and Banerjee goodwill due. Sorry, by Mistry. Sorry, by Mistry. And to Dalal and Banerjee goodwill due. Goodwill due. मलिक को 0 है बेटा. चलो हो गया यहां तक. नाउ विल डू रिवैल्यूएशन. सो रिवैल्यूएशन में लाइन बाय लाइन इधर क्रेडिट साइड ले लेता हूं पूरी, तो क्वेश्चन से लेता हूं. चलो मतलब सवाल ही नहीं आएगा. इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2500. सो बाय इन्वेंट्री 2500. देन फर्नीचर, फर्नीचर कितना था 650. टू फर्नीचर 650. टू प्रोविजन फॉर दीदी to provision for doubtful debts, $550. By land and building, by land and building 5000. Then लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, जनरल रिजर्व हो गया. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो इसमें जाएगा दलाल्स कैपिटल. ओके, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. सो कुछ बचा है क्या देखो. सो एक एंट्री बचा है लास्ट का. सो ऑल एंट्रीज आर ओवर ना. द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग गुडविल ओवर, जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड, न्यू रेशियो इज गिवन, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू दलाल्स कैपिटल. तो दलाल्स कैपिटल रेड पेन, रेड पेन बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दलाल कैपिटल में 1000. 1000. नाउ कैलकुलेट. सो सी बेटा दिस इज ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो. चलो लिखो टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 7500 minus 650 minus 550. This is 6300. Dalal, Banerjee, Malik. 2 by 5, 2 by 5, 1 by 5.
So 6,300 divided by 5 into 2, 2520, 2520, 1260. So 6,300. 2520 beta by revaluation. By revaluation 2520, 2520, 1260. By revaluation. And now you can do totals beta. So two balance carried down you can take now. Yes, take a total. Maybe लेता हूँ आप भी लो. So take a total 12,000 plus 2.6 plus 1 plus 1 plus 2.52. So my total is 19,120. 19,120. 19,120. 12 plus 2.6 plus 1 plus 2.52. 18,120. 18,120. 18,120. मैं कैसे करता हूं समझ में आया आपको? कॉमा का महत्व समझा होगा. सो 5 प्लस 1.3 प्लस 1.26 7560 7560. Sorry, and this is 3,000 5,000 5,000. चलो आगे. कैपिटल अकाउंट्स. दलाल, बैनर्जी, मलिक, मिस्त्री. 19,120, 18,120, 7560, 5,000. Okay. And now you can post your balance sheet from the updated balance sheet from question itself. आपने क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ट्रेड पेएबल 12,850. ये हो गया. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 500. ओके. लैंड एंड बिल्डिंग 30,000. फर्नीचर 5,850. इन्वेंटरी 2,500 plus 1,750. 11,750. Sorry, 11,750 plus 2,500. 14,250. 14,250. Next, trade receivable. You have to show it like this, beta. Trade receivable inner column. This is a presentation. Provision is always RDD. You have to show it separately. This is mandatory. $4,950. Cash in hand 140. And cash at bank increase by beta 5,000. 5,960. Let's take a total. 19,120 plus 18,120 plus 7,560 plus 5,000 plus 12,850 plus 500. 63. एक बार वापस 19.1 plus 18.12 plus 7.56 plus 5 plus 12.85 plus 0.5.
So this is 3000 रे. This is 3000. Mystery 3000 है. So 61 150 mystery 3000 है. 30 plus 5.85 plus 14.25 plus 4.95 plus 0.14 plus 5.96. Yes! 61 150. 21 minutes 37 seconds. 21 minutes 37 seconds. Write down timings also. टाइमिंग्स भी लिखो बेटा. यस 61 150. मिस्त्री 3K था. हाँ महिमा. नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. देखो आई नो थोड़ा लेंदी है बट बेटा दिस इज एग्जाम स्पीड. क्या करते हैं संकेत सर, लाइन बाय लाइन एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उसको सिर्फ चिपकाते हैं. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. आपको लाइन बाय लाइन एडजस्टमेंट ऐसे करते 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 जाना है और वो चिपकाने हैं. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. बट स्टूडेंट्स का क्या होता है, सर इतना लेंदी पार्टनरशिप. अरे भाई लेंदी है पर मजा है, एंजॉय करना चाहिए. पार्टनरशिप क्वेश्चन, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट प्रॉपरली. वेरी गुड सर्वेश. सर आदिति कुकरेजा, सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्यों नहीं आया रिवैल्यूएशन में? लॉजिक इज वेरी सिंपल बेटा. हमने कुछ रिड्यूस नहीं किया या इंक्रीज नहीं किया, जस्ट इट इज ट्रांसफर टू वन पार्टनर. So now suppose I have taken a bank loan. Okay, so our firm has a bank loan which is paid by, suppose you are a partner, so you paid it. So now partnership firm will pay to you. आया समझ में बेटा? मतलब क्या हुआ, हम तीन पार्टनर्स है, आप और मैं पार्टनर्स है और हमारे ऊपर बैंक का लोन है. अभी बैंक का लोन फर्म ने पे करना चाहिए, तो आपने पे कर दिया, फिर मैं आपको पे करूंगा, मतलब फर्म आपको पे करेगी. सो लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई है. अभी लाइबिलिटी का लॉस रिडक्शन नहीं हुआ, तो लॉस ना प्रॉफिट, सिर्फ लाइबिलिटी शिफ्ट हो रही है एक पार्टी से. मतलब बैंक लोन था, अभी फर्म आपको पे करेगी क्योंकि आपने बैंक लोन पे किया. आया समझ में? सो इट्स नॉट अ लॉस और प्रॉफिट, तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा. ओके चलो, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. हाँ देखो, आज का सेशन दिमाग का सेशन था. अभी मैं ऐसा ज्यादा ये नहीं, क्योंकि आज रिजल्ट भी लगा है तो बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं बार 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 बार. तो थोड़ा सा आज मैं ये, अभी जो बचे हुए सेशंस के क्वेश्चंस है प्लीज गो थ्रू इन बैच नंबर 5. आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपके सभी क्वेश्चन लाइन से लूं. विच आर नॉट कवर्ड यू कैन टेल मी इट इन द नेक्स्ट सेशन. बट अभी 2 दिन है आपके पास, यू हैव 2 days, सैटरडे संडे, सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस सेशन. टाइम लगा के सॉल्व नहीं किया होगा, एंड आई विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डेड वन. आई विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डेड वन फॉर remaining illustrations for with timings. Okay, with timings all questions, otherwise we can take it on Zoom also. तो हम लोग देखते हैं कैसे मैं आपको आपके साथ कनेक्ट होता हूँ. तो आपको पता ही है, बैच 6 विद संकेत सर टाइप करना और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना. बैच 6 विद संकेत सर, एंड यू कैन ज्वाइन ऑन टेलीग्राम चैनल. सो फॉर फर्दर डिटेल्स आई विल प्रोवाइड ओवर हियर देयर. यस मनीषा, 12th में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, बट बेटा तब हम लोग ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं जाते थे. सो व्हाट इज द सिंपल टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? फर्स्ट अपडेट योर क्वेश्चन में लॉस प्रॉफिट रिवैल्यूएशन गुडविल एडजस्टमेंट. फर्स्ट इज सिमिलर एडजस्टमेंट्स आर देयर, गुडविल एडजस्टमेंट, then revaluation account, then either memorandum revaluation account. So same adjustments are there. Okay, ठीक. Retirement. So please go through all these problems of admission questions. Okay, I will provide you all recorded lectures जो हमारे questions cover नहीं हुए हैं. And we are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A, B, C. चलो write down answer. Okay, so situation 1, their ratio is 3:2. C purchase 1/10 share from A. चलो write down new profit sharing ratio, new PSR, Roman 1, ABC, old ratio 3/5, 2/5. New ratio
new ratio one by 10. And from where he has taken this? From A. So 3 by 5, can I write it as 2 by 2 से multiply करता हूं तो 6 by 10, 4 by 10. Correct है? So 6 by 10 में से A has given it. 6 by 10 में से 1 by 10, 5 by 10. And B का same ही रहेगा 4 by 10 and C 1 by 10. So this is a new ratio. Whether sacrificing ratio is also asked? No. Okay. So first question over. Roman 2. Roman 2. A and B agree to sacrifice 1/10 share in the ratio of 2 by 10. Okay. So देखो, they are ready to sacrifice in the ratio of 2:3. So it's their sacrificing ratio. Okay. So I will tell you how to calculate this. Now, red pen. A, B, C. This is something different, beta. Old ratio. Old ratio, you can write 3 by 5, 2 by 5. New ratio that we have to find out. And sacrificing ratio, understand the concept. They will sacrifice 1 by 10 share in the ratio of beta 2:3. So 1 by 10. 1 by 10. And what is the sacrificing ratio? See beta, they are going to sacrifice 1 by 10, 1 by 10. In which ratio? 2:3 means 2 by 5 and 3 by 5. So they are going to sacrifice it. So number A पे आपने ये लिखा, number B पे आपने ये लिखा. New ratio is a balancing figure. So C पे आप ये लिखोगे. So 2 by 50, 3 by 50. अभी 2 by 50 and 3 by 50. So इधर में 10 से multiply करेगा. 30 by 50, 20 by 50. So 20 is to 50. And this is 17 is to 50. And this is 5 by 50. 5 by 50. So this is ratio 20 is to 28 is to 17 is to 5 is the second answer. 28 is to 17 is to 5. You can check new ratio 28 is to 17 is to 5. So sacrificing ratio आपको लिखना था. क्या लिखना था? Sacrificing ratio and then balancing figure. Balancing figure is new ratio. Balancing figure is new ratio. समझा? Next. Last question. Simply gets 1/10 share of profit. Type number 1. Very simple. Type number 1. Simple question. A, B, C. Old ratio. Second situation IMP mark करके रखना बेटा. New ratio 1 by 10. So remaining is 9 by 10. 9 by 10 they will share in the ratio of 3 by 5, 2 by 5. Nothing is given. So 27 by 50, 18 by 50, and this is multiplied by 5 by 5. So 5 by 50. 27 is to 18 is to 5. We already covered this question, I think. Okay. Sacrificing ratio 10 by 10 se multiply karo. It is not asked 30 by 50, 20 by 50, but still you can write sacrificing ratio 3 by 30 giver, 2 by 30 giver, 5 by 30 receiver. 4 minutes, 16 seconds. 4 minutes, 16 seconds. Very simple question. Illustration 5 over. Write down timings also. One more question, beta. One more question. अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है आगे के. लीना मीना 10 नंबर और 11 नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको. यस 10-11 कंप्लीट करना, कोई टेंशन मत लो. शुड आई टेक वन मोर क्वेश्चन बेटा और शुड आई वेट? बहुत ज्यादा हो गया रहेगा तो वी विल वेट. आई विल गिव यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर 6 to TY के क्वेश्चंस. यस ज्यादा हो गया तो वी कैन वेट. Yes, beta Shri, very good. Priyanka Mani Singh, sir, wait. Other students, beta, please you can tell me. But day after tomorrow, Monday, on Monday, beta, please go through all these questions.
रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं दे देता हूँ 6 to जो भी बचे हुए सेशन है। यस, यू कैन रिप्लाई मी। बहुत हो गया तो इट्स ओके। बेटा आई लाइक योर एनर्जी। ओनली वन स्टूडेंट रोट सर वेट। प्रमोद बोल रहा है आदिति यस बेटा, ये है ना, ये सीए स्टूडेंट है जो रुकते नहीं है, थकते नहीं है। वेरी गुड, ये सेशन होना चाहिए। वेरी गुड बेटा। यस, यही स्टूडेंट्स है दोज हु आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम, कि सर ले लो और कराओ और कराओ। वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट ने बोला वेट सर, मुझे लगा आप थक गए हैं। अरे बाप रे। A and B are the partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:1 respectively. Their balance sheet is given below. टिकटिकी जी चलो आ जाइए। 3:1। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आज मुझे बोला नहीं सर कंटिन्यू इट। कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड पेएबल, बैंक हुडी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। ओके। C admitted in the partnership. C purchase 1/3 of the goodwill for 2,000 and 10,000 as capital. तो 12,000 goodwill should not be appeared in the books. New ratio is given. New ratio is given. New ratio write down is given. Therefore, old is not equal to sacrificing. Plant and machinery is to be reduced by 10%. Plant and machinery 10% से reduce होगा। loss of 400। So यहाँ पे मैं इधर ही लिख के रखता हूँ loss 400, बाद में easy जाता है। 500 to be provided for bad debts. So 500 bad debts it's also loss. So bad debts में से 500 माइनस करूंगा। So इधर ही लिख के रखा loss। Inventory to be taken at 24,940। 24,940 मतलब 2940 add and it's a profit 2940 profit by bringing। अभी ये एडजस्टमेंट आईएमपी है। Mark this adjustment as IMP. Every question has some adjustment which are new. So here this is the new adjustment. By bringing or withdrawing cash of capital A or B to be made their capital proportionate to that of C. Okay, तो C के रेशियो में अपने को कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, मतलब 1:1:1 रेशियो रखना है। सो 1:1:1 तो C का कैपिटल बेस लेना है। तो दिस इज न्यू एडजस्टमेंट। कैसे करते हैं? रेड पेन से लिखेंगे। अभी देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कैसा आएगा। सो टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, सो दिस इज अ न्यू एडजस्टमेंट। टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, राइट डाउन। सबसे पहले yes, revaluation account particulars rupees 7 lines. Capital accounts write down yes, write down particulars ABC, particulars ABC। बेटा whenever there is adjustment of proportionate capital after 8 lines, you can open by red pen से mandatory open cash account। क्वेश्चन में भी लिख के रखो open cash account। why I will tell you at the end। open cash account open करना पड़ेगा, कैश और बैंक। particulars rupees, normally we don't open this account, but whenever their capital is proportionate, open this account, particulars rupees। Okay, and last one, balance sheet। Last one is balance sheet। Liability rupees, assets rupees। Very good beta। Liability rupees, assets rupees। 7 to 8 lines। चलो fast।
बैलेंस शीट रुपीज, एसेट रुपीज, ओके, ड्रॉन ओवर, डन, यस। चलो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो કેટલો છે 3:1। ये बैच में सबसे बढ़िया बात एक ही हुआ कि स्पीड आया बच्चों का। न्यू रेशियो, ये स्पीड आना ही चाहिए, 1:1:1। तो इधर 3/3 से मल्टीप्लाई करेगा, इधर 4/4 से मल्टीप्लाई करेगा। सो 9/12, 3/12, 4/12, 4/12, 4/12। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5/12, 1/12 रिसीवर है, गिवर, एंड 5/12 रिसीवर, sorry, 4/12 receiver. Now very important. Now red pen. 1/3 C brings 1/3 rupees 1,000, rupees 2,000 for 1/3 or 4/12 share और 4/12 का शेयर। तो बी कितना ब्रिंग करेगा, बी को भी ब्रिंग करना है, हाउ मच, फॉर टोटल 12 चॉकलेट्स ही ब्रिंग्स 4 चॉकलेट्स। सो 4 चॉकलेट्स के लिए 2,000 रुपीज, ये सी का शेयर है। तो 1 चॉकलेट के लिए कितना, सी विल ब्रिंग 500 rupees, B will bring, so red pen है, and A brings, A gets 4 के लिए 2,000, तो 5 के लिए कितना, इट्स सिंपल। अरे ये 4 के लिए लेके आया ना बेटा, 4 चॉकलेट्स के लिए 2,000, तो इसका एक चॉकलेट है बी का, तो वो भी कितना लेके आएगा 500, और सी कितना, ए कितना लेके जाएगा 2,500। सो ए को 2,500 मिलना चाहिए, सो ए के क्रेडिट में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सो राइट डाउन फर्स्ट ओपनिंग बैलेंसेस, सॉरी ये तो मैं भूल ही गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट डाउन 15,000 and 10,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजोर्स नहीं है ना, नहीं है। सो बाय कैश और बाय बैंक 12,000, सो बाय बैंक सी कैपिटल में 12,000। चलो 12,000 बैंक में ऐड कर दो, क्वेश्चन में भी बैंक ओडी है, सो बैंक लिखो 12,000, या बैंक है ही ना अपने पास, अच्छा बैंक ओपन ही किया है, सो बैंक ओडी अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, सो बैंक ओडी है, सो 2 कौन है ये, सी कैपिटल, अच्छा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 12,000, ओके। सो दो इफेक्ट्स हो गए। देन बेटा 2,000 रुपीज को डिवाइड करना है, सो 2,000 रुपीज को डिवाइड करना है, मतलब सी के डेबिट में रेड पेन से 2,000, बी के डेबिट में 500 एंड ए के क्रेडिट में बाय बी एंड सी गुडविल अमाउंट, गुडविल ड्यू टू ए अकाउंट, गुडविल ड्यू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेड पेन एडजस्टमेंट, ओके। चलो ये भी हो गया। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी देखो लाइन बाय लाइन, सेकंड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो ओवर। प्लांट एंड मशीनरी लॉस, टू प्लांट एंड मशीनरी 400, then to provision for that bad debts, to provision for DD 500, then by inventory 2940, by inventory 2940,
2940 एंड टू रिवैल्यूएशन, ये स्पीड जरूरी है एग्जाम में 90 मार्क्स जिनको स्कोर करना है, ये स्पीड जरूरी है। 2940, डोंट गिव अप। 2040, 2040, उसमें से ए बी क्या रेशो था? ओल्ड 3:1, 3/4, 1/4, 1530, 510। So to revaluation over, then by revaluation 1530 and by revaluation bracket में profit 1530 and 510। हाँ, now very important concept, नंबर 1 लिखो। नंबर 1, टू बैलेंस कैरिड डाउन। किसका नंबर 1 लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर 10,000। सी का कैपिटल निकालना है, सी का कैपिटल निकालना है। सी का बैलेंसिंग फिगर 10,000। ओके, नाउ बाय कीपिंग सीज कैपिटल एज बेस, नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ये नंबर ए लिखो, ए, या ए बी सी लिखो। सो दिस इज फॉर 1 शेयर, so remaining also B, B in पे yes, if one chocolate का 10,000 for C, तो देखो C का कैपिटल कितना बेस रखा? कैपिटल C का 10,000 है, तो A और B का भी कैपिटल कितना होगा? 10,000। वेरी सिंपल। सो हियर वी विल राइट 10,000, 10,000 and now you can calculate beta, now you can find out balancing figure नंबर सी टू कैश। नंबर सी पे टू कैश आएगा। सो ए पे किसको क्लोज किया? ए पे सी को क्लोज किया। नंबर ए पे सी को क्लोज किया, नंबर बी पे 10,000, 10,000 एंड सी पे हमने क्लोज किया टू कैश। ओके, सो अभी सी पे बैलेंसिंग फिगर देखो कितना आ रहा है? 15,000 प्लस 2,500, 17,500 एंड 19,030। सो रेड पेन से लिखेंगे इधर 9030 and this is 10,510 and balancing figure is 10. Balancing figure is 10. To seize capital, then buy A, by B, 9030 and 10. Hey, any opening balance for cash? Oh, sorry, cash has opening balance 1,000. Sorry, I forgot to take that. Two balance brought down. Sorry, I forgot to take two balance brought down 1,000. And now you can close this account. $3,960. And this balancing figure you will take in the balance sheet, cash account 3,960, capital account ABC 10, 10, 10, then you can check your question का ये कैश हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 24,500, इन्वेंटरी 24,940। ओके, रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 25,000 माइनस RDD 500, 24,500। इन्वेंटरी उसके ऊपर लिखता हूं, इन्वेंटरी 24,940,
plant and machinery 3,600, plant and machinery 3,600. Then you have plant and machinery हुआ, payable 12,000 as it is and OD as it is, payable and OD as it is, OD 15,000, and check whether your balance sheet is telling or not. 30 plus 12 plus 15, it's very simple, 57,000, and check 3.96 plus 3.6 plus 24.94 plus 24.5. Yes, 57,000. Done with this. Friends, 15 minutes, 9 seconds. What is new thing in this? To make their capital proportionate. So what is new? यहाँ पे कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, रेड पेन एडजस्टमेंट 10 10 10, इसको हमने पहले लिख दिया, 10 नंबर ए, सी को क्लोज किया, बी और सी का, ए और बी का उसी के ऊपर से कैपिटल निकाला, एंड बैलेंसिंग फिगर टू कैश, और कैश के क्रेडिट में इधर आप लिख सकते हो डी, इधर आप लिख सकते हो डी, ओके, डी डी 90,301 10 रुपीज. एनी डिफिकल्टी टिल नाउ? नहीं. 15 मिनट्स 11 सेकंड्स बेस्ट टाइमिंग है आपका. तो अभी ये क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए. कैपिटल अकाउंट को बेटा 8 to 10 लाइंस था. यस बेटा, आई हैव टेकन फुल आंसर. मनीष जैन. गुडविल एडजस्टमेंट इज वेरी सिंपल बेटा. गुडविल देख, एक बार गुडविल बता देता हूं. गुडविल, सी गुडविल, यहाँ पे बी एंड सी आर बोथ आर रिसीवर, बोथ आर रिसीवर. तो बेटा मनीष, अभी इसका 4 चॉकलेट था, सी का 4 चॉकलेट था, फॉर विच ही ब्रॉट 2,000 रुपीज. ओके, सो फॉर 1 चॉकलेट, बी का 1 चॉकलेट है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 500 रुपीज. ओके, एंड 4 चॉकलेट्स का 2,000, तो 5 चॉकलेट्स का कितना? 2,500. ये ए का आएगा, ये ए का आएगा. फ्रॉम सीज बेस वी कैलकुलेटेड ए एंड बी का बेस. ओके, और 500 ये लाएगा, बी को डेबिट देना है बिकॉज इज अ रिसीवर, और ये ए को क्रेडिट होगा. मतलब लाएंगे 2,000 प्लस 500, और ए लेके जाएगा 2,500 क्रेडिट. ये डेबिट और ये क्रेडिट ए. So this is the adjustment. So this is also new adjustment in this question. Mark this question as an important one. So ये question थोड़ा टेढ़ा था. Yes, प्रमोद. मनीषा, मैं सभी का इंडेक्स एक साथ आपको बता दूंगा. नेक्स्ट सेशन, एक भी सेशन मिस नहीं करना है. लास्ट सेशन इज अ रिटायरमेंट का है, डेथ रिकॉर्डेड में मिलेगा, और यदि ऐसे परमिशन देता है तो देखते हैं एक सेशन बढ़ के मिला तो. प्लीज प्लीज पार्टनरशिप को बिल्कुल भी ऑप्शन में मत छोड़ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. बहुत सिंपल है ये चैप्टर्स, और बाद में रिवीजन में फटाफट ये क्वेश्चंस देखते रहो. यस, ये हो सकता है कि आपका टाइम कम गिरे, आपको, आप मेरे स्पीड को मैच ना करें, पर बेटा प्रैक्टिस से आपका स्पीड बढ़ेगा, और वही तो चाहिए एग्जाम में 90 प्लस के लिए. 90 प्लस इस संकेत सर का टारगेट है, इतना याद रखो. चलो, थैंक यू, एंड वी विल मीट ऑन बेटा मंडे. चलो, थैंक यू.